We are. क्या हम live हैं? Let me check it. Yes, we are. We'll start in a second. Are we good to go? मेरा फोन पे क्यों अपडेट नहीं हो रहा? स्ट्रीम तो स्टार्ट हो गया. Okay, now we are live. Yes, so hey guys, welcome back to Codecules. Are you watching? People left the chat? I'm alone. Let's wait for a minute for people to join in. And people left. Should I start by myself? Someone was waiting for the stream to start and left the chat as soon as I joined. So, okay, let me start. So, today is day 38 of 45 days of code challenge. And as we know that we are going to extend our challenge because it is not feasible to be able to solve the remaining hard problems in just 10 days. So, that is why I decided that we will be extending our challenge. And today I have tried to shift few things in my setup. Tell me in the comment section or the live chat how is it today? Like my webcam. I've added something behind my back in the background and some positional changes with the light. And am I looking good in the webcam? Okay, we are not here for uh, editings and setup review, but we are here for the DSA challenge. So let's get started. I hope people will join me later or as we proceed. So get back to the work. And for those who are new here, my name is Harshit. I am final year BTech undergrad preparing for my placements. And okay, Mr. Dev has joined us. Welcome, buddy. So Ram Ram, Bhaiya Ram Ram. And what is up, bro? सेटअप कैसा लग रहा है देव? मतलब थोड़े माइनर से चेंजेस किए हैं मैंने विद द वेबकैम एंड द बैकग्राउंड. वो कैसा लग रहा है? पूरा का पूरा. ओके, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट वी हैड ऑलरेडी डन. ये तो डे 36 में किया था. नंबर ऑफ एनजी भी डे 36 में किया था. देन दीज प्रॉब्लम्स आर रिमेनिंग एंड वी विल some of them we solved on day number 37. And there is अच्छा, day 36. It was day 37 and it was day 36. Hey Zoro, welcome back. How are you? Today we will continue with that problem. Okay, these problem we had solved on day number 36. Okay, and on day 37 we solved sum of subarray minimum, asteroid collision and sum of subarray ranges. And today we will continue with the remaining 7 problems, but we will try to solve 3 only. Okay, duplicate.
I'm good, bro. I'm good. How it seems. And excited for day number 38. We are consistent and will be solving problems today. That's the best part. Okay, so today we will start with remove k digits. मेरी आवाज क्लियर है ना? Okay, and let's get started. Sum of subarray ranges रिवाइज करना है क्या? Let's do that. कल yesterday we had solved sum of subarray ranges and उसका कोड अपडेट नहीं किया था आई गेस. हाँ, तो उसका कोड भी अपडेट करते हैं. And let's revise that problem as well. And so वो थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है. हाउएवर इट इज मार्क्ड एज मिनिमम, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है. उसके लिए जो प्रीरिक्विजिट है वो है सम ऑफ सबअरे मिनिमम्स करना. ओके, सो if you are solving the sum of subarray ranges for the first time, I would suggest you to solve the sum of subarray minimums first, and let's revise that also. So जो subarray minimums वाला जो प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था कि हमें जो सारे सब एरेज हैं गिवन एरे के उसके मिनिमम्स काउंट करने हैं. लाइक जितने भी पॉसिबल सब एरेज हैं हर सब एरे का मिनिमम काउंट करना है और उसका सम करना है. एंड उसके लिए देयर वाज अ मेथड in which we used to count the number of sub-arrays for every particular element for which the particular element is the minimum. And for that, we used to count the left minimum and the right minimum element, and used to count the number of sub-arrays using this formula. क्या कितना फंबल कर रहा हूँ मैं. यूज. ओके, सर्दी में भी गर्मी लग रही है. हेलो एस जी ब्रो. स्वरित. हेलो स्वरित. स्वरित बोलूंगा मैं तेरे को. ओके, आज तो लेट हो गया थर्ड नंबर पे. कोई बात नहीं. सम ऑफ सब अरे मिनिमम्स के बाद में द नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज सम ऑफ सब अरे रेंजेस, जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का फॉर्मूला यूज करके वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम. तो हर सब एरे के लिए उसके मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस का सम फाइंड आउट करना था. तो रेंज इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम ऑफ एवरी सब एरे. ये रहा रेंज का फॉर्मूला. एंड using the same method of subarray minimums, we calculated the subarrays ranges, range of subarrays. And let's try run this today. So how we did that, like we are given an array. पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करते हैं. सम ऑफ सब अरे रेंजेस. वी आर रिवाइजिंग दिस प्रॉब्लम solution. We are given an integer array nums. The range of a subarray of nums is the difference between the largest and the smallest element in the subarray. So suppose if we are given this array, so it has three elements, then the number of subarrays of an array which has three elements is 6. मतलब अगर कोई array given है जिसमें three elements हैं, then the number of subarrays of that particular array is 6. And we need to calculate the range of every sub array, right? मतलब जितनी भी arrays सब एरेज क्रिएट होंगी उस हर एक सब एरे के लिए we need to calculate the range, and range is the difference between the largest and the smallest element of that sub array. Getting?
and then we need to return the sum of all the subarray ranges of nums. मतलब जो गिवन एरे है उसके हर सब एरे का रेंजेस का सम कैलकुलेट करना है हमको. So how do we do that? Using brute force approach. If we use brute force approach, we will be calculating each subarray of the given array, and that will end up then we will end up getting time complexity of big O of n cube, right? So with वो बहुत ज़्यादा बेकार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी. Then we can use, to optimize the solution, we can use stacks using monotonic stack, in which we use the formula of finding the सम मिनिमम्स, अरे सॉरी, सब एरे सम ऑफ मिनिमम्स, मतलब हर सब एरे के हर मिनिमम एलिमेंट का सम, और सब एरे सम ऑफ मैक्सिमम्स, मतलब हर सब एरे के मैक्सिमम का सम, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस हम निकालेंगे तो वी विल गेट द सम ऑफ रेंजेस. ओके, एंड हाउ वी डिड दैट? प्रॉब्लम तो समझ आ ही गया होगा. देन व्हाट वी डिड, we have an array nums, okay, and we stored the size of the given array in n, and we created an answer variable as long, which we will return after getting the solution, and we will add all the range values to this answer variable, okay. And then we created two arrays, left min and right min. Left min will store the left minimum for every given number in the array, or let me explain it on Scalidra. Suppose 1 2 3, और should be, हाँ ठीक है, इसी को लेते हैं. Let's say this is the input 1 2 3, okay, and we need to calculate the sum of ranges for this array. And for this array, जो the method we are using, we are calculating the left min for each element in the array, and the left min right min, and then left max and right max for both, मतलब both the things for each element. So for the left min and right min, we create two arrays of same size. So what we will do, let's copy it, and initially let's say it is 0 0, but we have created an array named left min, that is left min. It will store the minimum element on the left of each element in the given array. For example, 1 के left में तो कोई भी वैल्यू है ही नहीं, तो it will store -1, okay. And 2 के लेफ्ट में, then we will move forward, then we will check for 2. 2 के लेफ्ट में कोई मिनिमम वैल्यू है, that is 1. So we will update the left min value of index 2 with 1, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है गिवन एरे में, उसके लेफ्ट में उससे छोटा एक वैल्यू है, that is 1. So we have updated it, and then we will move forward and we will check for 3, and we will check if there is a smaller value on the left of the current index in the given array. It will check for 2, it is smaller, then it will check further, it will check for 1, it is the smallest possible value in the given array of for that particular index, so we will update it again with 1, okay. And similarly we will calculate the right min also. This is left minimum array, and similarly we will have right minimum array. And for right minimum we will start from the end, and we will check 3 के right में तो कोई minimum है ही नहीं, तो it will be -1, okay. And for 2, इसके right में भी कोई minimum नहीं है, तो it will also be -1, and 1 के right में भी कोई minimum नहीं है, तो it will also be -1. And similarly we will be calculating right max and left max. So we will create one more array for this,
And for left max, for 1 there is nothing on the left side, so it will be -1 itself. And for 2 there is no maximum, so it will be -1 also. And for 3 it has no maximum value on the left side, so it will be -1 also. And for the, okay, इसको update नहीं किया, it is max, left max and right max, left max and right max. Okay, and right, इसको भी update नहीं किया, it is right min, right minimum and right maximum. It is just keeping a track of the indexes of the maximum element on the right side, which is greater than the current element. And we will check for the right max. For right max for 1 is on, sorry, we have to store the indexes, not the numbers. For 2 the index will be 0, and for 3 the index will be 0, and here will be -1 only, and here the right max for 1 will be on 2, that is 2, that is on the second index, and for 2 that will also be on second index, and for 3 there is no right max. Okay, this way we have calculated the left min, right min, left max, right max, all the 4 arrays, right? And we will use this formula to calculate the sum of subarray, sum of minimums of every subarray and maximum of every subarray. Okay, and how we were doing it, we were using stack for doing so. Okay, so we will push the index of current element into the stack if it is empty, and then check if the stack is, while the stack is empty, and we will compare if the value that we did right now. Let me show you the exact code and dry run how we did use stack for doing the same. So let's suppose we are calculating left min, okay, and we will check if the stack is empty. Currently stack is empty, so we will simply insert the first element into the stack. We are iterating over the array using a for loop. Okay, so on the first index we checked if the stack is empty, stack was empty, so we simply inserted 1 into the stack. Okay, and then we will move forward to the second index, and we will check if the stack is empty, stack is not empty, then we will compare if the stack dot peak element is less than the current element. Okay, how we do that? This statement, ये जो स्टेटमेंट है, if array stack dot peak is greater than array of I, मतलब ये जो current element है, array of I क्यों लिखा हुआ है? अच्छा, इसमें array given था, उसमें ठीक है, सब array minimum वाले में array given था, इसमें nums given था. Okay, so hmm. So what we were doing, we were checking if the stack dot peak element is greater than the current element. That means we are right now pointing on the 2 on first index, and we are checking if the stack dot peak element is greater than the current element. If it is greater, then we will pop it. Otherwise, we will simply insert the next element into the stack. And one more thing,
And if it is not the case, that means the stack.peak element is not greater, then we will update the left min of I. That means currently सबसे पहले तो 1 के लिए 1 को इंसर्ट करने से पहले वी विल इंसर्ट -1, चेकिंग इफ द स्टैक वाज एम्प्टी। ये वाला स्टेटमेंट और ऐड होगा। ये वाला जो कोड है, हाउ इट विल रन, वी विल, ये टर्शरी ऑपरेटर है जो कि लेफ्ट min की वैल्यू को अपडेट करेगा डिपेंडिंग अपॉन इफ द स्टैक इज एम्प्टी। Initially, when we were on the first index, the stack was empty. So it checked stack is empty. अगर stack empty है तो what we did, we updated the value of the stack with, ये false होना चाहिए ना यार, ये swap नहीं हो गया। मतलब अगर empty होगा then we should insert I minus stack dot peak, I plus 1, y, if stack is empty it should insert I plus 1। कोड में I plus 1 insert कर रहा है, but I think it should insert -1। And I plus 1 क्या होगा? According to the code, it will be 1. And then when we move forward, we will be pointing on the second index, that is 2. Not second index, first index, 0 and 1। 0 based index में first index पे है 2। And we will check if the stack.peak is greater than the current element. It is not the case. So we will update the value of left min for I is equals to 1, that will be updated as I minus stack dot peak। stack के peak पे क्या है 1, so we will update I as 0। okay, और इसका मतलब यही हुआ simply कि we checked for the minimum element on the left for the current element, that was 2। ठीक है, and simply we do for 3 also and it will update it। but why we did it -1, didn't do it -1। इसका ड्राई रन करते हैं, लेट्स, I plus 1 क्यों होगा ये? मुझे कुछ और क्यों याद है। Yes, ChatGPT. The code snippet is part of monotonic stack approach for the sum of Subarray minimums. Yes, I know that. Let's take an array and walk through it. It took the stack 3124 as the input, and we want to find for each index I how far to the left the current element can extend. Okay, there's no previous smaller element, so the contribution extends all the way to the start.
ओके, सबसे बड़ा फ्लॉ तो यही था। हेलो सक्षम, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं कर रहा था वो यहाँ पे इंडेक्स जाएगा स्टैक के अंदर, नॉट द नंबर। एंड ओके, इसके बारे में देखते हैं। देन आई इज इक्वल्स टू वन पे एरे ऑफ वन इज इक्वल्स टू वन, टॉप ऑफ स्टैक इज जीरो, and array of 0 is 3 that is greater than 1, so we will pop. The stack is now again empty, and 2 and 1 is smaller than all previous elements, so it can extend 2 elements to the left. Then at I is equals to 2, array of 2 is equals to 2, top of the stack is index 1, array of 1 is 1 less than 2, stop popping, left of 2 is equals to, अच्छा ठीक है, 2 minus 1 that is 1, 2 is smaller than only itself, 1 comma 2. This happens when the current element is smaller. So far, there's no smaller element to the left, so it can span all the way back to the start of the array. I misunderstood one basic implementation, that we are counting the number of sub-arrays on the left, with for which the current element is the minimum, not the index or anything else. So it will update with the number of subarrays on the left for the current index, not the index of the minimum element. Okay, so 1 means that it is the only subarray in which it is the minimum element, and for every one it will be 1 only. Okay, एक दिन में ही भूल गया मैं, एक दिन नहीं 2 दिन हो गए. So all the minus ones will be updated with 1. That is why repetition is very important. अब कंटिन्यू करते हैं आगे. So it will be updated by 1, and then what we will do, we will push the current index to the stack. Saksham is asking, Bhaiya, which language is best for DSA, Java or C++? I do DSA in Java, and my senior says in a company interview, you have to solve problems within the time limit, and Java syntax is bigger than C++. Bro, to be honest, मेरे साथ कभी कॉलेज आना, कभी PPTs अटेंड करना, प्री प्लेसमेंट टॉक्स, and there are people asking the company representatives कि sir, why the C++ people are not allowed in your company. तो literally jokes बनते हैं इस बात को लेके कि people who had studied C++ in their whole academic years, they were not allowed writing C++ code in some companies. I'm not talking about each and every company. So sometimes ऐसा भी होता है. एंड आई एम नॉट टेलिंग कि सी प्लस प्लस बुरी है, जावा अच्छी है, या जावा बुरी है, सी प्लस प्लस अच्छी है. दोनों के यूज केसेस अलग हैं. व्हेन यू आर लर्निंग सी प्लस प्लस, देन देखो मैं सिंपली बताता हूँ, दोनों का जो डोमेन है ना, जब तुम जावा में सी प्लस प्लस करोगे ना, वो क्या कह रहा हूँ यार, जावा में डीएसए करोगे
जावा में डीएसए करोगे तो यू हैव ऑप्शन टू लर्न वेब डेवलपमेंट इन जावा ऑल्सो। ठीक है, जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट। ऑल्दो ये डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब तुम कंपनी में जॉब करोगे यू हैव नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट लर्निंग द टेक स्टैक। अगर तुम्हें ग्रो करना है तो तुम्हें कोई भी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, एंड इफ यू स्टार्टेड विद जावा यू हैव ऑप्शन टू लर्न वेब डेवलपमेंट यूजिंग जावा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट एंटरप्राइज लेवल की, छोटे मोटे स्टार्टअप के लेवल की नहीं, बट एंटरप्राइज लेवल की। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके बहुत सारे कोड जावा में लिखे हुए हैं, तो देयर इज अ प्लेंटी रिक्वायरमेंट ऑफ जावा फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनमें, जो 20-20 30-30 साल पुरानी कंपनीज हैं उनका कोड जावा में लिखा हुआ है, तो यू हैव गुड अपॉर्चुनिटीज यूजिंग योर जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट स्किल्स इन दोज कंपनीज। ओके, और जो तुम्हारी सर्विस बेस्ड कंपनीज आती हैं, जो मास रिक्रूटर कंपनीज आती हैं तुम्हारे कॉलेज में, वो ज़्यादातर इसी रोल के लिए हायर करती हैं। मतलब सिमिलर चीज़ ही करनी होती है तुम्हें। बट अगर तुम सी प्लस प्लस करते हो तो इफ़ यू आर इन योर फर्स्ट ईयर एंड यू आर डूइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तुम्हारी रैंकिंग में डिफरेंसेस आ रहे हैं कि तुम्हारा सॉल्यूशन 1 मिली सेकेंड से पीछे रह गया, तब इट मेक्स एनी सेंस कि तुम सी प्लस प्लस में कोड लिखे तो तुम्हारा कोड थोड़ा 2 सेकंड पहले रन हो गया और किसी का कोड 2 सेकंड बाद रन हुआ। वो सिर्फ वहीं पे काम आएगा सी प्लस प्लस से कोड करना डीएसए में, जब तुम कोई कॉन्टेस्ट दे रहे हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। अदरवाइज यू आर अप्लाइंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, amazon, ऐसी कंपनीज में तुम अप्लाई कर रहे हो एंड योर डीएसए इज रियली वेरी स्ट्रांग, तब थोड़ा बहुत कोई डिफरेंस आएगा कि तुमने जावा से किया या सी प्लस प्लस से किया। बट फॉर बेसिक कंपनीज जो तुम्हारे कॉलेजेस में आती हैं, सबके कॉलेजेस में आती हैं, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यू डू सी प्लस प्लस, यू डू जावा, यू डू एनीथिंग यू वांट। तुम जावा स्क्रिप्ट में भी कर रहे हैं, कुछ लोग जावा स्क्रिप्ट में डीएसए कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू जस्ट नीड टू नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग एनी लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज तुम्हें आती है, जिसमें भी तुम प्रोफिशिएंट हो, use that language and don't stuck into these confusing questions and myths के ये अच्छा होता है, वो अच्छा होता है, सब अच्छे होते हैं। just start working। एस जी भाई से पूछो, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो एंड ही विल हेल्प यू आउट विथ एवरी doubt and question you have, although he himself has not done anything except hacking servers, like he hacked our server. He is there in our server, okay? So let's continue. जो मैं भूल गया था, we were only inserting the index into the stack, okay? This is the exact thing that we are doing. We are calculating the number of subarrays ending at the current index, which have array of I as their minimum, okay? And then you are welcome, bro. And then we calculate this left right formula to calculate the contribution of that particular element. Okay, let me explain here. I misinterpreted it. For the given array, how many subarrays are possible? Let me make. There are six number of subarrays possible for the given array as input. Okay, and let's say this is our input, and the first subarray will be 1 itself. The second subarray will be 2 itself. Third subarray will be 3 only. Then 1 comma 2. Then 2 comma 3. Then 1 comma 2 comma 3. These are the six subarrays possible for the given input. Okay, and then what we are doing, like let's say this is our pointer,
Okay. And for 1, we are calculating the number of subarrays for which the current element is the minimum. And उसके लिए we will use two arrays. पहले हम लेफ्ट साइड के लिए कैलकुलेट करेंगे. सपोज अगर 2 होता तो 2 के लेफ्ट में कितनी सब एरेज हैं जो पॉसिबल हैं 2 के इंक्लूड करके, जिसमें 2 मिनिमम एलिमेंट होगा, राइट. एंड राइट नाउ लेफ्ट मिन में हम वी आर ओनली कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ सब एरेज possible on the left of the current element in which 1 is the minimum. Okay, तो इस केस में सिर्फ एक ही है जिसमें 1 is the only minimum, जो कि सिंगल एलिमेंट है. So that is why we will insert 1 into it. And after that, for 2 it will also be 1 only, क्योंकि 2 के अलावा there is no subarray in which 2 is the minimum element, right. And similarly 3 will also be a single element on the left side in which it is the minimum element, right. So ये जो left min वाला जो array है ना, it will contain only ones. ये भी 1 है, ये भी 1 है. एक पूरा ड्राई रन और एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे भी क्लियरली याद रहेगा. ये कंप्लीट करते हैं पहले. लेफ्ट मिन कैलकुलेट किया, देन वी विल कैलकुलेट राइट मिन के 1 के राइट में कितने सब एरेज हैं जिसमें इट इज द मिनिमम एलिमेंट. तो 1 के बाद कितने सब एरेज हैं जिसमें 1 इज द मिनिमम एलिमेंट. सो वी विल, इसका कलर कैसे चेंज होगा. दिस इज इट. हाँ. तो जब when we are checking on the right side the number of subarrays in which the current element is the minimum, तो एक तो ये सब एरे होगा जिसमें 1 इज द मिनिमम, राइट, फॉर द फर्स्ट इंडेक्स. एक ये सब एरे होगा जिसमें 1 इज द मिनिमम, ठीक है, दिस इज द मिनिमम ऑफ दिस पर्टिकुलर सब एरे. एंड एक ये सब एरे होगा जिसमें इट इज द मिनिमम, राइट. सो देर आर 3 सब एरेज, okay, on the right side. And for this particular element, let's say on the left side it has one minim subarray, and on the right side it has, sorry, two subarrays होंगी. वन को तो ऑलरेडी काउंट कर लिया ना हमने. So it will have two subarrays on the right side. Okay. And if we calculate the sum, like sum of subarray minimum, if we calculate the sum of subarray minimum, sum would be equals to the sum of all the subarrays in which this particular element is minimum. ओके. तो ये कितनी एरेज में मिनिमम है, 3 एरेज में. तो इट वुड बी जस्ट 3 into the actual value of that particular index, that is 1. Okay. And similarly we will calculate the number of subarrays in which 2 is the minimum element and multiply that number with 2, and so on. 3 के लिए भी we will be calculating the left min and right min, मतलब number of subarrays in which 3 is the minimum element, and on the right side and on the left side, and we will multiply it with 3. So it will just give the contribution of each element for the sum of minimums. और ये अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्योंकि मैंने ब्रूट फोर्स अप्रोच नहीं बताया. एंड एक बार ब्रूट फोर्स अप्रोच भी एक्सप्लेन कर देता हूँ फॉर माई ओन अंडरस्टैंडिंग. ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या होगा, we have these number of subarrays. Okay, these are the number of subarrays and we need to calculate the number of minimums
for each subarray. So let's say S is the subarray, sum of the minimums of each subarray. So for the first subarray, the minimum is 1, so we will add 1 to the given sum. Then there is second subarray में minimum क्या है, 2 है क्योंकि single element है, तो we will add 2 into the result. Okay, result or the answer, whatever you call it. For then we will check for the third subarray, the minimum is 3 itself, okay, as it is a single element, and we will add 3 to the sum. Then we will check the fourth subarray, इसके अंदर 1 ही है, it is repeated, जो first element था वो repeat हुआ, right? And then we will check the next subarray, इसमें 2 is the minimum element है ना, जो 2 elements है उनमें से 2 is the minimum, so we will add 2 into the solution. Okay, and then the last subarray in which 1 is the minimum element, and we will add 1 into it. So what is happening here कि जो 1 है ना, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो 3 बार रिपीट हो रहा है मल्टीपल सब एरेज में. अगर यही बहुत बड़ा एरे होता तो वी हैड टू कैलकुलेट अ बिग नंबर ऑफ कैलकुलेशंस वी हैड टू डू. सपोज यही बहुत, एंड इफ दिस वाज द गिवन एरे, तो हर मतलब कितनी सारी सब एरेज होती हैं जिसमें 1 ही एक मिनिमम होता और हमें सारी सब एरेज कैलकुलेट करनी पड़ती. तो उसको रेड्यूस करने के लिए वी यूज दिस स्टैक वाला फॉर्मूला, जिसमें वी यूज दिस स्टैक मेथड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सब एरेज इन विच द करंट एलिमेंट, like this one, is the minimum. We count the number of subarrays on the left, we count the number of subarrays on the right, and we multiply the number of total number of subarrays in which the one is minimum into the value of this particular number on this index. Okay, it will give the contribution of one. Like in this case, the how many times one is contributing to the solution? One is appearing here, one is appearing here, and one is appearing here. That means it is appearing 3 times. So S is nothing but 3 into 1 plus 2. How many times 2 is appearing? 2 is appearing 2 times in 2 subarrays in which it is the minimum. So we will multiply the number of subarray in which the 2 is minimum with the value of the 2 that is on that particular index, and then we will check for 3. 3 is only in one subarray in which 3 is the minimum, that is itself only, क्योंकि ये तो largest element है. So we will just add one time 3, only one time, and the total sum will be equals to how much? 4 plus 3, that is 7 plus 3, 10. Then the answer will be equals to 10. This is just the minimum. Okay, and ये कहाँ से उठाया था 1 2 3 वाला एग्जांपल? ये सम ऑफ सब अरे रेंजेस. ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला निकालते हैं. हम्म, ये तो एस मिनिमम हो गया. ओके, एस मिन हो गया 10. एंड सिमिलरली व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग एस मैक्स, ये राइट से करते हैं. ऐसे ही इफ वी वर कैलकुलेटिंग एस मैक्स, ब्रूट फोर्स से ही ड्राई रन करते हैं. तो एस मैक्स क्या होता, जो 1 है फर्स्ट वाले एरे में, तो 1 ही मैक्सिमम एलिमेंट होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी ऑन द लेफ्ट साइड राइट साइड. सारे काउंट करते हैं पहले, एंड देन सिर्फ वन टाइम वन मैक्सिमम एलिमेंट होगा किसी सब एरे का. 2 कितनी बार होगा? 2 टाइम्स होगा. 2 into 2 कर देंगे उसको. 2 into 2. क्यों? क्योंकि 2 बार 2 इज द मैक्सिमम. 2 is maximum here, 2 is maximum here also. Okay, in two sub arrays. Plus 3 कितनी बार मैक्सिमम होगा? 3 टाइम्स मैक्सिमम होगा, तो वी विल मल्टीप्लाई 3 into 3 times. ओके, ओके, सो द एस मैक्स विल बी इक्वल्स टू
कितना 9 + 4 is 13 + 1 is 14. Okay, S max is 14 and S min is 10, and we need to calculate the range, sum of ranges. S range will be equals to maximum minus minimum. Okay, so the sum of ranges will be equals to S max minus S min. तो जो सारे मैक्सिमम्स हैं सब एरे के, उसमें सारे मैक्सिमम्स का सम में से सारे मिनिमम्स का सम माइनस कर देंगे तो वी विल गेट द सम ऑफ रेंजेस. So that will be equals to 4, and I think that is the right answer for this. The output is 4, है ना? 10 14 minus 10. And this is what we did. We calculated the number of subarrays on the left min, मतलब left side, for every index, and the minimum number of subarrays in which the current index is minimum on the right side, and we were just calculating the number of subarrays. For me, it is clear now. And we calculated left min, left max, right max, and used it into the formula left max into right max into nums. Okay. And one more thing कि इसको multiply क्यों कर रहे हैं? क्योंकि because congratulations Swarit Grewal, on exposing you. Okay, I understood the solution, and let's move to the next problem. Sum of subarray ranges is revised, and let's solve the. अच्छा ठीक है, इसका कोड लिखते हैं. कोपायलट से लिखाएंगे. Calculate the total contribution of maximums. इसने तो बहुत इजीली कर दिया. Let's just indeed code and see what time complexity it gives. This seems easier. And has better time complexity also. Let's see this approach as well. How he did it. He calculated total contribution of maximum for each element, int left is equals to I, right is equals to I, that is 0 0, while left is greater than 0 and nums left minus 1 is less than nums I. करते कॉल लाइव स्ट्रीम पे बात करूंगा.
Let's see. The idea is to calculate the contribution of each element as the maximum and the minimum in all possible subarrays. For each element, we find the range of subarrays where it is the maximum and where it is the minimum, and then we can compute its total contribution. Approach: for each element, find the number of subarrays where it is the maximum and the minimum. Use monotonic stack to efficiently find the next and previous greater or smaller element. Calculate the contribution of each element and sum it up. Consider the subarray nouns. For element 1, maximum contribution is 1 in the subarray. This method is better for understanding the intuition and solutions. Let's see what it is saying. Uh, full screen visible है ना? सर सुपर चैट स्टार्ट हो जाएगा तो आप करना ये काम. Let's see. It is telling the same thing. For 1, we will calculate the maximum contribution for 1. That is 1 into 1 into 3. That is in the 3 subarrays. It is contributing as minimum, and minimum contribution is 1, that is subarray 1 in which it is maximum. ये थोड़ा शब्दों का माया जाल है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. मैं हो जाता हूँ. इसका आंसर ही गलत क्यों आ रहा है? ये AI, why you should not depend on AI. Right, now we solved. इसका सॉल्यूशन सही है, बट जो ड्राई रन इसने किया इट इज नॉट करेक्ट. इसका 1 2 3 का आंसर शुड बी 4, but it is giving 12 as the answer. नाम से अच्छा लग रहा है. Okay, now it is giving the correct answer. And let's see.
I got impressed with its solution, and it's more complicated now. What it did total max accumulation, each nums as a subarray maximum for I is equals to 0, value is 1, left is 0, right is 0. Okay, now this is the actual dry run for the code. We are using a for loop to iterate over each element in the subarray, and then we are calculating left and right. Matlab we have assigned left and right variable as the current index, and using a while loop, while left is greater than 0 and nums of left minus 1 is less than nums of I. इसका मतलब क्या हुआ? That means if we are starting with I is equals to 0, so value is 1, left is 0, right is 0, contribution will be 1. So the total maximum is 1. That means there are one subarray in which 1 is the maximum. For I is equals to 0, sorry, I is equals to 1, the value is 2, left will be 0, and nums of 0 is less than 2, and right is 1. Of right plus 1 is less than nums of I. Total max is equals to nums of I into I minus left plus 1 and right minus I plus 1. Okay, it is doing the same thing, but in one go. We were calculating the left sum and right sum separately, but it is just calculating left and right contribution at the same time. Okay, I got it. This is the better solution with better time complexity. And we have saved it on our VS Code. And let's create a folder for day 38. In which we will be solving the next problem, which was remove k digits. Okay, so let's read the problem statement. Given a string num representing a non-negative integer num and an integer k, return the smallest possible integer after removing k digits from the num. So we have given a string number as a string, and a number k, and we need to remove k numbers from the string such that the resulting number is the smallest number. So let's say in this is the given number, and the value of k is given as 3, and we need to remove three digits from the given number such that the resulting number is smallest. So guess which three numbers should be removed. ब्रूट ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा इसका? ब्रूट फोर्स okay, what we were doing, we need to remove three digits from the number such that the resulting number is minimum.
So what we will do, starting from the first index, we will check. अच्छा, अगर if we had to solve it by ourselves, if we have this number and we need to remove three numbers such that the resulting number is the smallest, so किस किस नंबर को हम remove करेंगे? So to make the, we will start from the first index, that is the highest decimal position, and we will keep it small. So 1 को remove नहीं करेंगे because it is smaller than the next element. We will remove 4, we will remove 3. Okay, and then we will remove 2, and the resulting answer should be 1219. That is the smallest number according to me, and it is the right answer. But how should we write the logic? So this is the actual input string. We will use a stack. We can use a stack. किसी को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक आ रहा है क्या इसको सॉल्व करने का? If you have any intuition in your mind, you can share it. Otherwise, we are solving it together. So let's say we start iterating over each character in the given string, starting from the first index. We will check if our stack is empty. ठीक है, अगर stack empty होगी तो we will simply insert the current element into the stack. Okay, starting wala first index ko. Okay, and then we will move forward and move the counter to the next character, and then we will check if the stack is empty or not. In this case, stack is not empty. Then we will compare the values of the current element, that is num of I, that is equals to 4, if it is greater than the stack dot peak value. If it is greater than stack dot peak value, stack dot peak is 1, that means stack के top पर क्या है 1, and the current value is greater than stack dot peak, so we will remove this value or skip it, and we will move forward. That means we skipped it and we move forward. I think ऐसा करना चाहिए. I don't know if it is the right approach or the solution. We'll just try to solve. Then we will move forward without inserting it into the stack, and then we will check if the next element is greater than the element on the top of the stack 3, which is greater than the current top element. Then we will simply skip this number also. Okay, one more thing we will check कि जो given number है ना, कितने numbers remove करने थे. We have one more thing, k is equals to 3. We have k is equals to 3, that means we need to remove 3 numbers. So what we will do, we will store the valid numbers into the stack, and invalid numbers को हम ignore करते जाएंगे depending upon if the stack dot peak element is smaller than the current element. And क्या होगा, एक और कंडीशन होगी, and k is greater than 0. K is greater than 0. ओके, तो ये दोनों कंडीशन को चेक करेंगे. जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब तक वी विल बी कीप moving forward in the number. And let's see,
फर्स्ट को इंसर्ट किया स्टैक में, देन वी चेक इफ द स्टैक इज नॉट एम्प्टी. इफ द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, देन वी विल कंपेयर द करंट वैल्यू ऑफ the array with the stack dot peak. If it is greater, then we will just simply reduce the value of k and skip it. Okay, तो k माइनस माइनस हो जाएगा. That means k की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. K will be equals to 2. Okay, and we have removed 4 from the number. Okay, then इसको कॉपी करते जाते हैं. And now the pointer is pointing at 3, that is on the second index, and then we will check if our stack is still empty, and we will compare if the current value is greater than the stack dot peak value. So currently stack dot peak value is 1 and the value of the current index is 3, which is greater than the stack dot peak value, that is 1, and also k is greater than 0. Okay, k is also greater than 0 currently. So what we will do, we will just skip it क्योंकि it is greater than the stack dot peak, and k की value को reduce कर देंगे. Okay, so we have also removed 3 from the number, and we will move forward. Now k will be equals to 1, and we will check, मतलब अब जो pointer होगा, the pointer will be pointing to the next number or digit in the given number. Okay, now the pointer is pointing to 2, and now we will again compare if the current value is greater than the stack dot peak value, that is 2, which is greater than 1, which is on the top of the stack, and also k is greater than 0. Right now it is 1, है ना? K is greater than 0. So what we will do, we will skip it and k की वैल्यू को reduce कर देंगे. और अगर ऐसा नहीं होता तो we would just insert the next element into the stack. ओके, अभी ये सब हुआ. इसके बाद में अगर k is equals to 0, then we will insert the remaining elements into the stack. तो क्या करेंगे, stack dot push कर देंगे. ओके, मतलब ये इंट्यूशन सही लग रहा है मुझे, तो लेट्स ट्राई टू कोड इट. व्हाट वी विल डू, let us store the size of the string. So let's say int n is equals to num dot length. It will store the length of the string. Okay, we have k, we have length of the string. We will run a for loop for int I is equals to 0, I less than n is the length of the string, and then I plus plus. Okay, uh, also we need a stack, so we will create a stack of characters. Okay, character st is equals to new stack, stack s capital होगा stack. Okay, and in this we will check while the stack is not empty, not stack dot is empty, and k is greater than 0. Okay, k greater than 0 होना चाहिए. And one more thing, अगर what we were doing, we were checking if the current element is greater than stack dot peak. ठीक है,
and for each I यहाँ पे कैरेक्टर क्रिएट कर लेते हैं. Character C is equals to num dot character at I. Okay, so C is representing the digit at that particular index, and now we will just compare C, and if C is the current digit and if C is greater than stack dot peak, that is st dot peak, C nahi C. Okay, stack dot is empty and k is greater than 0, and C is greater than stack dot peak, that is the top on of the stack. Then we will just simply reduce the value of k. Am I doing something wrong? K is greater than 0, stack dot peak is less than the current element, current element is greater than stack dot peak. Stack dot peak पे 1 है and we are on 4. We will compare. If 4 is greater than 1, then we should not insert 4 into the stack. And if the stack is empty, let me do it. Okay, what we did, we will skip the numbers which are greater than stack dot peak, and we will insert in the stack if stack dot is empty. Okay, if the stack is empty, स्टैक को स्टैक नहीं लिखा है क्या? एस टी लिख दिया है, तो इसको भी एस डी रहने तो ठीक है. And we will check if the stack is empty or C
is not equals to 0. Okay, character 0. Then we will just simply push the current character or the digit into the stack. Okay, this is what we are doing. And after that, we have inserted all those digits into the stack. After that, abhi tak we have iterated over each digit in the string and skipped it if the value of k is greater than 0 and the current digit is greater than stack.peak. If it was otherwise, if it is less than stack.peak, we will simply push it into the stack. अच्छा ठीक है, we are pushing every element which is not 0 into the stack, so we have to remove it also. So but it will pop the other element, right? All the best. We were skipping it and we'll insert the other digits into the stack, and at the end we will convert the stack into a number. So we skipped 4, 3 and 2, and after that let's say k को skip कर दिया. Then what we will do, if the stack is empty, we inserted the current character into the stack. Then we skip the next digits if it is greater than the stack.peak and k is greater than 0. Okay, and then let's say at this point the value of k is become 0 and the next value is greater than. अच्छा ठीक है, we have to compare if it is not 0, इसको 0 नहीं होना चाहिए. If it is not 0, we will simply insert into the stack. So the next value on the top of the stack will be 1, 2, and the next value will be 1, which will also get inserted on the stack.
and the next value will be 9, that will also get inserted on the stack. And after that we will simply popping off the numbers from the stack and return it as a string. Okay, so what we will do, stack dot push C kiya. Okay, we have inserted all the numbers into the stack, and now we just simply need to return the stack as a string. So is it possible कि सारे numbers iterate हो जाएं लेकिन k की value अभी भी ज़्यादा रहे, like k is greater than 0 or the stack is empty? तो ठीक है, this is the edge case. While stack is not empty, it is empty, and k is greater than 0, then we will simply reduce the value of k and pop the top element from the stack. Stack dot st dot pop. Okay, and after that if the stack becomes empty, that means के the number of, मतलब k की वैल्यू इतनी ज़्यादा थी कि सारे नंबर्स को रिमूव कर दिया, तो the we will return 0. If stack st dot is empty, then we will return 0 as a string. Okay, and now we will create, okay, bye bye SG for it. All the best for what? For future. Now we will convert the stack into a string. We will create a string builder. String builder result is equals to new string builder. Okay, new string builder. Then while our stack is not empty, not stack dot is empty, we will append the current character or the character on the top into the string builder. So result dot res dot append stack dot pop, and after that we will return the reverse of the string. So we will return res dot reverse dot to string. स्ट्रिंग बिल्डर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे. ओके, डॉट टू स्ट्रिंग, एंड दिस इज इट. लेट्स रन इट. अभी स्टैक की जगह st होगा. आई फॉरगॉट एंड डिड अ मिस्टेक. ओके, इसके अलावा व्हाट आर द अदर मिस्टेक्स? स्टैक की जगह, ठीक है, st की जगह स्टैक लिख दिया हर जगह. दैट इज द ओनली प्रॉब्लम. तो चलो स्टैक को st में कन्वर्ट करते हैं. दैट इज इजी. st 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 लेट्स रन इट. किसी का सॉल्व हुआ क्या? बाय योरसेल्फ. कंपाइलर एरर अगेन. स्टैक अभी भी है. लाइन नंबर 9 and 29.
What is wrong? अच्छा empty के बाद curly brackets नहीं लगा है. Okay, this is a method and stack लिखा हुआ है 29 पर. यहाँ पर आएगा st. Let's run it. Zoro is trying. Wrong answer. फर्स्ट केस में ही आंसर गलत हो गया. 4 को क्यों? If stack is empty and c is not equals to. अच्छा ठीक है, और लगाया है ना यहाँ. ठीक है, we will pop these up. यहीं पे कंफ्यूज हो रहा था मैं. एंड still the answer is wrong. 1219 की जगह 4329 आ रहा है आंसर. वन 1020 k is equals to 1. This is what I thought is the problem. If the current character is less than stack.peak, then we will do this. Stack.push. Let's run it. And this zero problem.
Now it should work. Still. Let's go G dot push C classes. So it will insert all the numbers into the stacks. Right now we need to remove the leading zeros, but starting वाले zero का क्या करना है? अच्छा, ठीक है. That is the leading zero after generating. यहाँ पे let's file result dot length is greater than 1 and result dot character at the first index is equals to 0. Then we will result dot delete the character at the first index. Okay, so delete character at 0. So it will solve the error with this test case, and I hope the remaining things we have done correctly. और यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे रिवर्स पाथ में नहीं पहले करना पड़ेगा, तो रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग को तो रिटर्न कर देंगे, and here we will do result is equals to result dot reverse, and let's run. Now it is working, and let's submit it. And it worked. Not the best solution, but it worked. So we got it
Right. Okay, this problem is done. Remove k digits from the given string number. And I'm taking a quick short break and will be right back in 5 minutes. Okay, Zoro, I will be back in 5 minutes. I want some water. यहाँ नहीं है मेरे पास. So you to take a break. We have revised InQ implementation and easy problems, including not next creator element, but we have solved. We have solved remove k digits from the number and also revised some of Subarray ranges and minimums and maximums. We will continue with remaining problems from the sheet. This is it. Wait for me. I will be back and I will be back at 11:30. Okay. So wait for me till then. This is my camera.
So hey, am I audible? I'm back again. So we will continue with the four remaining problems and let's get started. Today is day number 38 and we have solved. Where is that remove k digits? Okay, we have solved it by ourselves on LeetCode and let's create a file for remove k digits.java and let's see its solution. And we did it already. Here is the code and let me revise you. Let me revise it for you, not revise you. Okay, so what we did, we use a stack to push the numbers into the stack if it is smaller than the stack.peak value. Okay, we used a for loop. For iterating over each character in the string, the given number as a string, and for each number we converted and stored it into character C, and then we checked if the stack is not empty, and k is greater than 0. K is the number of digits that we need to remove from the string, and if the value of current character is less than stack.peak, we will remove it from the stack and decrease the value of k. And let's see what solution the copilot has provided us. And the copilot created a string builder SP, and then for every digit in the given character converted it to a character array, and while k is greater than 0 and sp.length is greater than 0, and sp.character at sp.length minus 1 is greater than digit. It deleted the character at sp.length minus 1. What does it mean? These two edge cases we know very well, but for every digit in the given number, while k is greater than 0 and sp.length is also greater than 0, and we are appending, okay, ठीक है, sp की length greater than 0 नहीं है, तो we will just simply inserting the digit into the string builder, and sp.length minus 1, that is we are checking the last digit in the string builder, and if it is greater than current digit we will remove it. Okay, it is simply using string builder instead of stack. Okay, stack को use ही नहीं कर रहा है. Let's do this solution. So let's do this.
mm, say string builder sp builder में b capital होगा builder sp is equals to new string builder and 4 character digit for each digit in num dot 2 character array. We will what we will do, we will use a while loop if k is greater than 0 and sp dot length is also greater than 0. That means we have already inserted a digit in the sb. Sb is acting as a stack, and sb dot character at sb dot length minus 1 length minus 1. Okay, if that last digit in the sp or the stack is greater than character or digit, then we will just simply delete that last number. Delete character at sb dot length minus 1. Okay, and k minus minus. After that, we will add the current digit into the string builder. Digit, okay, and after that we will remove the edge cases. Mm, that is sp. It is very simple. अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है अभी भी, then we will just simply remove the last k elements. length set length sb dot length minus k, and after that, to remove leading zeros while sb dot length is greater than 1 and sb dot character at 0 is equals to 0, and as we will delete the leading 0, that is sb dot delete character at 0, and then we will return sb dot length equals to 0. अगर ये true होगा, then we will return 0. Otherwise, we will return sb dot to string. Okay, let's run it. And submit, hoping that the time complexity will be higher, and it is much better solution with 8 millisecond time complexity. Is there anyone watching the live stream? If you are watching, do comment. Say hi in the live chat if you're watching.
Okay. Thank you, Zoro, for staying up this long. Sometimes I get demotivated when people don't watch. Let's move to the next problem. This is a hard problem, and let's solve this problem and we will sum it up today's stream. And let's go. From today, we will be solving two problems every single day. So what is the name? Largest rectangle in the histogram. Largest rectangle in histogram.java. Full screen करने के बाद let's read the question. Given an array of integers heights representing the histogram's bar height, where the width of each bar is 1, return the area of the largest rectangle in the histogram. Okay, so we need to return the largest area. So we will have to find the largest consecutive heights first that we can do using monotonic stack. Mm, how can we use that for this problem? Let's say this is the given input. So we will have a histogram. So let's say this is one. So on the first index it is 2 units. On the second index it is 1 unit.
third index it is 5, and then it is 6 on the next index, and then 2 and 3 again. Then it is 2, and then it is 3. And we need to calculate the area of the largest rectangle. क्या हो रहा है ये? Okay, so simply, as we can see, the largest rectangle will be this, in which the height will be. Okay, we have to find the largest consecutive. Oh, oh, oh. Thank you, Zoro. This is what happens with me. और मेरे पास ना फोन पर भी स्क्रीन खुला हुआ है, मेरा ध्यान ही नहीं गया उस पर. Okay, let's continue. So we have created this histogram, and we can see that we have to find the largest consecutive. But still, मतलब अगर height consecutive largest heights निकालेंगे, then also we will only be able to calculate this. अगर ऐसे horizontally अगर कोई rectangle होता, suppose यहाँ पे भी 2 होता, तो it would have been the largest rectangle with area equals to 12. So how will be able to calculate that? Mm, we can use monotonic stack, increasing monotonic stack. 1, 2, 3, 4, and 5. Let's see what are the topics. We can only use monotonic stack to come up with the solution, I guess. And let's create a stack. So let's say int n is equals to height, heights dot length, and let's create a stack of integer. Stack is equals to new stack, and we will store the indices of bars into the stack. What else we can take into consideration for solving this problem?
let's say max area int max is equals to 0. It will be we will be storing the maximum possible area into the max variable. We need to use increasing monotonic stack. Okay, so we will only add a current bar into the stack if the height of the current bar is greater than the previous stack dot peak bar. Okay, मतलब bar at the index which is on the top of the stack. How can we use a stack? Let's say this is a stack. We are moving forward. Stack keeps the indices of bar in increasing order. Two, 1, 5, 6, 2, 3. Let's say we have this stack. We have a variable named max which will store the area. Okay, and we will return it at the end. And we are using a for loop for iterating over each bar of height, and we will insert it into the stack if it is greater than the previous height. Okay, for I is equals to 0 to heights dot length. 0 से लेके height तक we will go, and heights, so let's say for I is equals to 0, current height will be 2. जो फर्स्ट इंडेक्स है 0, उस पे height is equals to 2 and index is equals to 0. So since initially the stack is empty, so we will just simply push the first element into the stack, or the index of the first element, that is 0. Okay, so 0 is the first index that we have inserted, and then we will increase the value of I, and for I is equals to 1,
इसको यहीं करते हैं. While stack not empty and current height is e- less than heights of stack dot peak. Yes, that is what I'm trying to do, I guess. And let's say when I is equals to 1, for loop mein when I is equals to 1, we will check if the stack is empty. Stack is not empty, then we will check if the current height is ch is equals to 1. ठीक है, if the current height is less than stack dot peak, मतलब stack dot peak पे क्या होगा, मतलब हाइट ऑफ स्टैक डॉट पीक दैट इज 2, मतलब स्टैक के अंदर जो इंडेक्स है उसकी हाइट है 2, सो इट इज लेस देन 2, देन वी शुड remove it and we will check the area. So we will pop it. So we will store it in a variable named height. So let's say h is equals to stack dot pop heights of stack dot pop heights of stack dot pop. Okay, so we will remove that height as it is smaller. एरिया कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं? Now we got the height. If the stack gets empty, I'm not getting to the point. Let's watch its solution. Love Topper.
हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव पोपर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। हम पहुंच चुके हमारे लेक्चर में 56 पर। स्टैक्स हम पढ़ रहे हैं। अब तक हमने स्टैक और उसकी इंप्लीमेंटेशन देख ली है। स्टैक के बेसिक टू मीडियम लेवल के 8 क्वेश्चंस भी कवर कर लिए हैं। अब आने वाली 5 वीडियोस में या फिर आने वाले 5 क्वेश्चंस के अंदर हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। स्टैक के हार्ड लेवल क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, नो मीडियम नो इजी, सारे हार्ड लेवल क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका नाम है लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर एरिया इन हिस्टोग्राम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एक हार्ड लेवल क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री वार्म अप टाइप क्वेश्चन, एक मीडियम क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, उसके बाद हम ये क्वेश्चन पकड़ेंगे। ठीक है, आसान है, सब समझ में आ जाएगा अभी। तो क्वेश्चन कहता है कि नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, क्या मतलब है इस बात का, फटाफट समझ लेते हैं। लेट्स से मेरे पास इनपुट में एक एरे या फिर एक वेक्टर पड़ा हुआ है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट पड़े हैं 2 1 4 3। ये 4 एलिमेंट मेरे पास पड़े हुए हैं। अब क्या हुआ, मेरे से क्वेश्चन ने बोला कि नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, यानी हर नंबर के लिए हर नंबर के लिए मुझे फर्स्ट स्मॉलर एलिमेंट पकड़ा दो। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से 2 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस 2 के लिए इस पूरी विंडो में जो भी फर्स्ट स्मॉलर एलिमेंट आ रहा है वो बता दो। तो इस पूरी विंडो में अगर मैं जाऊँ, पहले मैं 1 पे गया तो 1 तो छोटा आ गया, तो ठीक है, इसका आंसर ही 1 हो गया, बढ़िया। फिर मैंने क्या बोला, यार ये जो 1 है, अगर मैं इस 1 की बात करूँ तो इस 1 के लिए इसके आगे वाली इस पूरी विंडो में जो भी पहला स्मॉलर एलिमेंट आ रहा है वो बता दो। तो 4 भी छोटा नहीं है भाई और 3 भी छोटा नहीं है, तो इस केस में क्या करो, आंसर -1 बता देना, बढ़िया। फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यार 4 के केस में इस पूरी विंडो में जो भी पहला स्मॉलर एलिमेंट आ रहा है वो बता दो। तो 4 जो है, जो 3 है वो छोटा है 4 से, तो इन शॉर्ट इसका आंसर 3 आ गया, बहुत बढ़िया। फिर मैंने क्या बोला कि यार ऐसा करो, इस 3 के केस में आगे वाली विंडो में जो भी फर्स्ट स्मॉलर इनपुट में एक एरे या फिर एक वेक्टर पड़ा हुआ है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट पड़े हैं 2 1 4 3। ये 4 एलिमेंट मेरे पास पड़े हुए हैं। अब क्या हुआ, मेरे से क्वेश्चन ने बोला कि नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, यानी हर नंबर के लिए मुझे फर्स्ट स्मॉलर एलिमेंट पकड़ा दो। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से 2 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस 2 के लिए इस पूरी विंडो में जो भी फर्स्ट स्मॉलर एलिमेंट आ रहा है वो बता दो। तो इस पूरी विंडो में अगर मैं जाऊँ, पहले मैं 1 पे गया तो 1 तो छोटा आ गया, तो ठीक है, इसका आंसर ही 1 हो गया, बढ़िया। फिर मैंने क्या बोला, यार ये जो 1 है, अगर मैं इस 1 की बात करूँ तो इस 1 के लिए इसके आगे वाली इस पूरी विंडो में जो भी पहला स्मॉलर एलिमेंट आ रहा है वो बता दो। तो 4 भी छोटा नहीं है भाई और 3 भी छोटा नहीं है, तो इस केस में क्या करो, आंसर -1 बता देना, बढ़िया। फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यार 4 के केस में इस पूरी विंडो में जो भी पहला स्मॉलर एलिमेंट आ रहा है वो बता दो। तो 4 जो है, जो 3 है वो छोटा है 4 से, तो इन शॉर्ट आपका आंसर 3 आ गया, बहुत बढ़िया। फिर मैंने क्या बोला कि यार ऐसा करो, इस 3 के केस में आगे वाली विंडो में जो भी फर्स्ट स्मॉलर एलिमेंट आ रहा है वो बता दो। आगे तो कुछ है ही नहीं, तो आंसर -1 बता दो भाई। इन शॉर्ट इस इनपुट एरे के लिए आंसर क्या आ गया, 1 -1 3 -1। ये बात समझ में आई, यानी 2 के लिए पहला स्मॉलर एलिमेंट 1 था, फिर 1 के लिए स्मॉलर एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए -1 आ गया, फिर 4 के लिए एलिमेंट जो था वो 3 था, और 3 के लिए तो एलिमेंट है नहीं, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कहता है कि यार जो भी आपको इनपुट एरे दिया हुआ है उनके लिए नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का क्या मतलब है कि अगर इस प्रकार लेट से एरे है, तो मैं अगर इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, इसके लिए नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट फाइंड करने जा रहा हूँ, मैं 2 के लिए नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट फाइंड करने जा रहा हूँ, तो कुछ नहीं करना, इसकी आगे वाली विंडो में चेक कर लो पहला स्मॉलर एलिमेंट कौन सा है, पता लग जाएगा, वही बता देना, वही आंसर। ये क्वेश्चन कहता है, इसकी भाषा ये आप समझ पढ़ सकते हैं एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर हम बात करते हैं अप्रोच के बारे में, इंट्यूशन, ब्रूट फोर्स, कैसे भैया सॉल्व कैसे करना है, दिमाग में कैसे आ रही चीजें वो समझेंगे। ठीक है, अप्रोच में जाने से पहले फटाफट अपने स्पॉन्सर को शाउट आउट देते हैं। अगर मैं लेट से 2 को ले लेता हूँ, तो एक नंबर है 2, तो 2 के लिए मैं क्या करूँगा, हमने बोला कि यार मुझे ना कोई दूसरी अप्रोच निकाल के दो जिस पे मैं ये जो मेरा एग्जांपल है 2 1 4 3, लेट्स से मैं इसको एन स्क्वायर की जगह ऑफ एन में सॉल्व कर पाऊँ। मैंने बोला ठीक है, एक है मेरे पास, बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ तुमको, ठीक है। तो इसको फटाफट समझते हैं। तो हमने क्या बोला, रादर देन मैं एक एलिमेंट को पकड़ूँ और उसकी पूरी विंडो चेक करके आऊँ, उससे अच्छा मेरे पास एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या कहता है, मैं स्टैक को यूज करूँगा। कैसे करूँगा समझ लेते हैं, और क्यों यूज करूँगा अभी समझ लेते हैं। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक स्टैक, मुझे पता है कि हमेशा राइट मोस्ट एलिमेंट के लिए नेक्स्ट एलिमेंट -1 आने वाला, और अच्छे से बनाता हूँ इस पर एक बार। मैंने इसको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ और दोबारा लिख देते हैं कि ये है 2, ये है 1, ये है 4, ये है 3। तो लेट्स से मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया एलिमेंट्स को, मैं 3 को स्टैक में डालने आया, या फिर मैं 3 को स्टैक में डालने जा रहा हूँ। मैं बेसिकली 3 मेरे पास आया और मैंने बोला चलो भाई इसका मुझे नेक्स्ट एलिमेंट बता दो फटाफट। मैंने बोला ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट बता दो फटाफट। ये हुआ सवाल, तो उसमें नेक्स्ट एलिमेंट चाहिए, इस स्टैक में चले जाओ भाई, इस स्टैक में जाकर चेक कर लो। ठीक है, अब हमने क्या पता है कि जब 3 स्टैक में गया, इसका मतलब ये तो एम्प्टी पड़ा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, पर एम्प्टी है ना यार, ऐसा तो हम कंफ्यूज हैं कोड करते हुए। तो मैंने बोला इसको स्टार्टिंग में स्टैक के अंदर -1 स्टोर कर लेना, स्टार्टिंग में स्टोर कर लेना, क्योंकि मुझे पता है मैं राइट से आऊंगा और मेरे को हमेशा पता है कि यार इसका आंसर हमेशा मुझे -1 ही देना है। तो मैंने स्टार्टिंग में एक एलिमेंट, जब भी मैंने स्टैक बनाया होगा कि यार एक स्टैक बना दो, और उसके अंदर मैंने सबसे पहले पुश करके रखा होगा इनिशियल वे में, समझ आ गई। तो 3 के लिए जब मैं यहाँ पे आया, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि यार छोटा एलिमेंट ढूंढ के लाओ, छोटा एलिमेंट लाओ लाओ। तो आपने ऊपर से देखा कोई छोटा एलिमेंट पड़ा है, तो इस केस में आपको -1 मिल गया। इन शॉर्ट हो सकता है कि ना मिले, ठीक है, छोटा एलिमेंट लाओ। तो आपने स्टैक में देखा, तो आपने स्टैक में देखा क्या पड़ा हुआ है, स्टैक के टॉप में 2 केस हो सकते हैं भाई, या तो कोई छोटा एलिमेंट मिल जाए, या तो कोई छोटा एलिमेंट मिले, या तो कोई बड़ा एलिमेंट मिले। अगर छोटा एलिमेंट मिल गया तो भाई वही तो आंसर है, वही तो आंसर है, स्टोर करा लो उसको। ठीक है, उसको स्टोर करा लो, और फिर क्या करो, जो भी आपका वैल्यू था, लेट्स से कि 3 को मैं करंट के द्वारा दर्शा रहा हूँ, उसको पुश कर देना। अगर बड़ा एलिमेंट मिला तब तो बड़ा तो क्या हुआ भाई, मैंने क्या बोला है, या फिर तब तो लूंगा मैं, क्या कर दिया सिंपल। सबसे पहले हमारे पास समझ में आई ये चीज़, इसको भी पॉप करके बना बोला
सबसे पहले स्टैक बना लो, स्टैक बना लिया, स्टैक इंट ये एस सी प्लस और प्लस में लेट्स करता है। डेवलपर Hi everyone and welcome to the complete DSA series, and today we're going to solve one more interesting DSA चैट जीपीटी पॉइंट देगा एंड एक इनर लूप चलाएंगे फ्रॉम j इक्वल्स i टू n, जो हमें हमारा एंडिंग पॉइंट देगा। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जितना भी रेक्टेंगल फॉर्म होता है उससे हम अपनी एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द ब्रूट फोर्स अप्रोच। हम इसी सेम प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। और उसे कैसे करेंगे, उसी के ऊपर हमारा पूरा का पूरा लेक्चर बेस्ड होने वाला है। बेसिकली अपनी ऑप्टिमल अप्रोच के अंदर वील ट्राई टू फाइंड एन अप्रोच जिसके अंदर हमें बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगे, यानी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हम इस कॉम्प्लेक्स सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। उसके लिए हमारी अप्रोच क्या रहेगी उसको एक बार देखते हैं। बेसिकली इस सवाल के अंदर एकदम से देखकर तो पहचाना नहीं जा सकता कि लार्जेस्ट रेक्टेंगल क्या होगा, बट हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम हर एक सिंगल बार के लिए उसका लार्जेस्ट रेक्टेंगल निकाल लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पता है हमें इस बार जो इंडेक्स 0 पर है, इस 2 हाइट के बार को अगर इंक्लूड करना ही करना है आंसर में, तो हमारा लार्जेस्ट रेक्टेंगल क्या हो सकता है। वी नो अगर इस बार को इंक्लूड किया ही किया तो हमारा लार्जेस्ट रेक्टेंगल यही है जो फॉर्म हो सकता है। सो इस रेक्टेंगल की विड्थ हो जाएगी 1, हाइट हो जाएगी 2, तो इसका एरिया हो जाएगा हमारे पास 2 के इक्वल। तो ये 0th बार के लिए हमने मैक्सिमम पॉसिबल एरिया निकाल लिया दिस पॉसिबल दिस रेक्टेंगल, जिसकी हाइट है 1 के इक्वल एंड इसकी विड्थ हो जाएगी 6 के इक्वल। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा हमारे पास 6 के इक्वल। सिमिलर चीज हम इस बार के लिए करेंगे। इफ इट इज कंपलसरी फॉर अस टू इंक्लूड दिस बार, तो द लार्जेस्ट एंड बार को अगर इंक्लूड करना ही करना है तो लार्जेस्ट रेक्टेंगल हम ये फॉर्म कर सकते हैं टू लुक समथिंग लाइक दिस, जिसके अंदर वील हैव अ हाइट ऑफ 2 एंड अ विड्थ ऑफ 4। तो हमारा एरिया आ जाएगा हमारे पास 8 के इक्वल। एंड फाइनली फॉर दिस बार द लार्जेस्ट रेक्टेंगल इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, जिसके अंदर हाइट इज 3 बट द विड्थ इज 1, तो हमारे पास यहाँ पर एरिया आ जाएगा 3 के इक्वल। अगर हर एक बार के लिए कंपलसरी हो जाए कि उस बार को इंक्लूड करना ही करना है, तो हमारे पास ये लार्जेस्ट रेक्टेंगल्स की वैल्यू आएंगे और इन्हीं सारी वैल्यूज को कंपेयर करके हम अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली हमारा जो आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी दिस वैल्यू विच इज इक्वल टू 10, यानी हमारे इस हिस्टोग्राम के अंदर वैल्यू कभी क्या करेंगे, लूप के अंदर हर एक बार के लिए हम करंट एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ये जो करंट एरिया वैल्यू होगी ये ओके बेसिकली हम अपने हर एक ith बार के लिए कैलकुलेट करेंगे एंड इस करंट एरिया के बेसिस पर हम अपने लिए एक आंसर कैलकुलेट करेंगे विच विल बी द मैक्सिमम ऑफ एग्जिस्टिंग आंसर वैल्यू एंड आर करंट एरिया। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइनली इसी सेम आंसर को हम रिटर्न कर देंगे अपने फंक्शन से। अब यहाँ पर ये जो करंट एरिया हर एक ith बार के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, दिस करंट एरिया इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाइट इनटू विड्थ। अब हमें पता है कि अगर एग्जांपल के लिए इस बार का एग्जांपल ले, हमें पता है कि अगर इस बार को इंक्लूड करना ही करना है तो मैक्सिमम पॉसिबल हाइट की वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम पॉसिबल हाइट की वैल्यू हो सकती है 5 के इक्वल, क्योंकि हम इस बार को इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। तो एरिया के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल हमेशा फिक्स हो जाता है जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता है एंड दैट वेरिएबल इज दिस हाइट वैल्यू। तो हमें हाइट की वैल्यू ऑलरेडी पता है विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ith बार, हमें सिर्फ इस विड्थ को कैलकुलेट करने का काम करना है। तो ये पूरा अप्रोच पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल है। इसके अंदर जो सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होने वाला है वो होने वाला है कि किस तरीके से हम अपने हर एक ith बार के लिए जब एरिया कैलकुलेट करें तो उसकी विड्थ कैलकुलेट करें, क्योंकि हाइट ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो इस विड्थ को कैलकुलेट करने के लिए लॉजिकली सोचते हैं कि वही अगर ये समझ वैल्यू नहीं होगी आ रहा। कैलकुलेट द करंट एरिया, तो किस तरीके से हम उसकी विड्थ को कैलकुलेट कर श्वेता सकते हैं। दीदी अच्छा लेट अस टेक एन समझाती हैं एग्जांपल ऑफ दिस 5 वाला बार। लेट अस सपोज समटाइम्स। हम इस बार पर हैं एंड हमें इसके लिए अपना करंट एरिया कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है हाइट हमारी 5 तक होगी। अब अगर लॉजिकली सोचें तो लेफ्ट में हमारी जो बाउंड्री है उसे हम कब तक एक्सटेंड करते जाएंगे, उस बाउंड्री को हम तब तक एक्सटेंड करते जाएंगे जब तक हमें अपनी 5 वाली हाइट मिल रही है। जैसे ही 5 से कोई छोटी हाइट चली गई वैसे ही हम अपनी बाउंड्री को स्टॉप कर देंगे। तो हमारे करंट एरिया के लिए हमारी जो लेफ्ट बाउंड्री लगेगी वो यहाँ पर लगेगी। सिमिलरली राइट की तरफ ओके बाउंड्री को कब तक एक्सटेंड करेंगे, जब तक एक्सटेंड करेंगे जब तक 5 से बड़ी या उसके इक्वल वैल्यू हमें मिल रही है। जैसे ही हमारे पास एक ड्रॉप आ जाता है यहाँ पर हमारी बाउंड्री आ जाएगी फॉर द रेक्टेंगल, और हाइट तो हमें पता ही है कहाँ तक आएगी। तो बेसिकली अपनी विड्थ जब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो लेफ्ट में और राइट की तरफ हमारी बाउंड्री तब तक एक्सटेंड करती है जब तक करंट हाइट से कोई और नेक्स्ट स्मॉलर स्मॉलर वैल्यू एंड कम प्रीवियस नहीं है हमारे स्मॉलर पास। एलिमेंट। यही सेम चीज हम ओके चाहें तो वी कैन ऑब्जर्व इट फॉर अ डिफरेंट बार। लेट अस सपोज हम 2 का एग्जांपल लेते हैं। अब हमें पता है इसके रेक्टेंगल के लिए मैक्सिमम हाइट 2 पर कैप हो जानी चाहिए। तो बाउंड्री को हम कब तक एक्सटेंड करेंगे लेफ्ट साइड में, तब तक एक्सटेंड अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड करना तो इस तरीके तक। तो लेट अस सपोज हम 5 के लिए देख रहे हैं। अब 5 के राइट साइड में 2 एंड 3 दोनों स्मॉलर वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, पर बाउंड्री को कौन डिसाइड करेगा, बाउंड्री को नियरेस्ट स्मॉलर वैल्यू डिसाइड करेगी। 2 एंड 3 में से नियरेस्ट स्मॉलर वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हमारी बाउंड्री यहाँ पर आकर रुकने वाली है। तो किसी भी एलिमेंट के लिए जिसके लिए हमें उसका लार्जेस्ट रेक्टेंगल यानी करंट एरिया कैलकुलेट करना है, हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी लेफ्ट नियरेस्ट स्मॉलर एंड राइट नियरेस्ट स्मॉलर वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट दिस 5, तो इसके लिए लेफ्ट नियरेस्ट स्मॉलर वैल्यू ये हो जाएगी, इसके इंडेक्स को कह देते हैं लेफ्ट या एल। इसकी राइट नियरेस्ट स्मॉलर वैल्यू ये हो जाएगी, इसके राइट इंडेक्स को कह देते हैं आर के इक्वल। तो कैन वी से कि इस एल एंड आर वैल्यू से हम अपनी विड्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली एल हमें हमारी लेफ्ट बाउंड्री देगा एंड आर हमें हमारी राइट बाउंड्री देगा। अब राइट बाउंड्री एक्जैक्टली आर पर एग्जिस्ट नहीं करती, आर से जस्ट पहले यानी एक पहले वाले बार पर एग्जिस्ट करती है। तो हमारी जो विड्थ हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आर माइनस एल माइनस 1। उसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर आर की वैल्यू है 4 के इक्वल, एल की वैल्यू है 1 के इक्वल एंड इसमें से -1 करेंगे देन द विड्थ इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2। और 5 के लिए हमारा रेक्टेंगल जो फॉर्म होता है वो ये रेक्टेंगल फॉर्म होता है जिसके अंदर हमारी विड्थ है 2 के इक्वल। तो ये जो विड्थ वैल्यू है इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं इन दिस सेम फॉर्मूला। तो यहाँ पर बेसिकली हमें अपनी r माइनस एल माइनस 1 वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और अगर हर एक सिंगल बार के लिए हमने उसकी r यानी राइट स्मॉलर नियरेस्ट एंड लेफ्ट स्मॉलर नियरेस्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया तो उससे हम हर एक सिंगल बार के करंट एरिया को कैलकुलेट कर पाएंगे। सो नाउ द प्रॉब्लम चेंजेस इनटू कैलकुलेटिंग दीज टू वैल्यूज फॉर एवरी सिंगल बार ऑफ द हिस्टोग्राम। तो दो वैल्यूज बेसिकली अब हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमारी राइट स्मॉलर नियरेस्ट वैल्यू, इसे हम क्वेश्चन साइड में जो भी हमसे लार्जर वैल्यू है एंड जो हमें
ही प्रोसेस पर गोइंग टू यूज अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। हमारे पास ऑलरेडी हमारी जो हाइट्स हैं वो गिवन है। अब इस स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी आंसर हमें कैलकुलेट करना है उसे स्टोर कराना स्टार्ट करेंगे। अगर हमें राइट साइड में स्मॉलर नियरेस्ट वैल्यूज चाहिए तो इस स्टैक के अंदर हम स्टोर करेंगे स्मॉलर वैल्यूज फ्रॉम करंट एलिमेंट विच इज हाइट ऑफ आई अगर हमारा करंट एलिमेंट है तो उससे जितनी भी स्मॉलर वैल्यूज होंगी उनको कोशिश करेंगे स्टैक के अंदर एंटर करने की, और जो भी लार्जर वैल्यूज होंगी उन्हें हम अपने स्टैक से रिमूव करते चले जाएंगे। तो ये वही सेम कॉन्सेप्ट है जिसे हमने नेक्स्ट ग्रेटर के अंदर यूज किया था। नेक्स्ट ग्रेटर में सिंपली हम यहाँ पर लार्जर वैल्यू स्टोर ओके करते थे जोरो, और जो भी स्मॉलर गुड वैल्यूज होती थी नाइट। उन्हें स्टैक से पॉप करने का काम करते थे। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट अप्रोच, क्योंकि हमें राइट साइड में स्मॉलर नियरेस्ट वैल्यू चाहिए तो हम अपने एरे को रिवर्स फैशन में ट्रिवर्स करना स्टार्ट करेंगे। बाय इन रिवर्स फैशन, इफ वी ट्रिवर्स दिस एरे इन द रिवर्स फैशन तो क्या हम कह सकते हैं हमें हमेशा राइट स्मॉलर नियरेस्ट वैल्यू चाहिए। राइट साइड की वैल्यूज निकालने के लिए अगर 5 का एग्जांपल लें तो 5 के लिए राइट साइड की वैल्यूज पहले से हमारे पास होनी चाहिए ताकि इनमें से हम नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 को कैलकुलेट कर सकें। तो किसी भी एलिमेंट के लिए अगर राइट स्मॉलर नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है तो हम राइट साइड के सारे एलिमेंट्स को पहले ट्रिवर्स करेंगे और फिर उस करंट एलिमेंट तक आएंगे। सेम चीज 2 के लिए, अगर 2 के लिए राइट साइड में स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है तो पहले सारे के सारे राइट एलिमेंट्स को ट्रिवर्स करेंगे फिर 2 पर आएंगे। तो इसीलिए हम अपने एरे को रिवर्स फैशन में ट्रिवर्स ओके, करेंगे जब भी हमें राइट साइड में स्मॉलर नियरेस्ट वैल्यू चाहिए, या फिर जब भी हम जाने वाले दिस हैं इज कि वन समथिंग दैट कोई वी आंसर नो। एग्जिस्ट नहीं करता, यानी हमारा राइट स्मॉलर हो जाएगा माइनस। सारे आंसर्स को स्टोर कराना स्टार्ट करेंगे, एक इंडेक्स 0 के लिए, एक इंडेक्स 1 के लिए, इंडेक्स 2 के लिए, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4 एंड 5। क्योंकि हमने अपनी ओवरऑल अप्रोच के अंदर नोटिस किया था कि विड्थ निकालने के लिए हमें इवेंचुअली राइट स्मॉलर एंड लेफ्ट स्मॉलर का इंडेक्स वैल्यूज की जरूरत होती है कैलकुलेशन के लिए। तो हम जो स्टोर करेंगे वो इंडेक्स स्टोर करेंगे। इनफैक्ट स्टैक के अंदर भी हम वैल्यूज का इंडेक्स ही स्टोर करने वाले हैं, क्योंकि एक बार अगर हमारा हो जाएगा माइनस उसके बाद वी आर गोइंग टू अपडेट आर आइटरेटर। अब हमारा आइटरेटर 2 पर चला जाएगा। अब जैसे ही हम 2 पर आ गए 2 का भी राइट स्मॉलर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे स्टैक के अंदर। अब स्टैक के अंदर जो एलिमेंट है दैट इज बाय इक्वल टू बाय 3। जोरो। 3 2 से छोटा नहीं है, मतलब 2 के लिए राइट स्मॉलर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस 3 को भी हम क्या करेंगे स्टैक से रिमूव कर देंगे। तो इस 3 को स्टैक से रिमूव कर देंगे, 2 के लिए भी आंसर हो जाएगा -1 के इक्वल। एंड अब हम 2 को इंसर्ट कर देंगे इन द स्टैक। 2 को इंसर्ट करने का मतलब है इसका इंडेक्स इंसर्ट कर दिया। उसके बाद वी आर गोइंग टू अपडेट टू अ प्रीवियस वैल्यू अवेलेबल है। उसके बाद नहीं हो सकता 5 के लिए नेक्स्ट स्मॉलर 6 तो नहीं स्मॉलर है तो इंडेक्स हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। 2 का इंडेक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4 एंड जाने से पहले राइट स्मॉलर क्या इसकी भी वैल्यू बड़ी के लिए भी आंसर को भी एंटर कर देंगे, उसी का इंडेक्स आएगा और हमारे पास सारे के सारे प्रोसेस है जो हमने नेक्स्ट ग्रेटर वाला जो क्वेश्चन है उसको भी जाकर देख सकते हैं। बिकॉज इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इस सूडो कैलकुलेट कर इसके अंदर आंसर स्टोर करेंगे। ऑफ साइड हमारा एक बैकवर्ड्स लूप जिस वैल्यूज नहीं उन्हें हमें पॉप करना है सबसे पहले। तो पॉप करने के लिए हम सिंपली एक वाइल लूप लगा सकते हैं यहाँ पर। अब इफ स्टैक साइज इज ग्रेटर देन 0 एंड हमारे स्टैक के टॉप पर जो भी एलिमेंट है इफ दैट एलिमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा जो भी हाइट्स एरे है, यानी इस एरे के लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया है ht। तो जब भी हम ht लिख रहे हैं मतलब हम अपने मेन एरे की बात करें तो वहां पर स्टैक से हम वैल्यूज को कर देंगे पॉप। सो दिस इज अ वाइल लूप दैट वी हैव क्रिएटेड। अब वाइल लूप के अंदर क्योंकि स्टैक के अंदर हम स्टोर करते हैं इंडेक्स वैल्यूज तो डायरेक्टली इंडेक्स वैल्यू को नॉर्मल वैल्यू से कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस इंडेक्स वैल्यू को एरे के अंदर डालकर हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी एंड उसे अपनी करंट वैल्यू के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो ये हमारा वाइल लूप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन हमारा स्टैक खाली हुआ या नहीं हुआ हम राइट स्मॉलर ऑफ आई को कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारा स्टैक खाली हो गया होगा तो कोई भी राइट स्मॉलर एग्जिस्ट नहीं करता, उसके इसमें आंसर -1 हो जाएगा। नहीं तो स्टैक के टॉप पर जो भी इंडेक्स था तो इसके लिए भी नेक्स्ट ग्रेड कौन सी ऐसी स्मॉल साइड वाला So एलिमेंट we जिसमें हमारा just राइट need इज to calculate the index of the right smaller and the left smaller. अरे कौन सा कर दिया? So here we have it will store the current height, and if I is equals to n, the height will be 0, otherwise height will be height of I, that is current height. Okay, and we will check if
the current height is smaller. So while stack is not empty and current is less than height of stack dot peak, and we store height into a height variable. Int height is equals to heights of stack dot pop, and we need to calculate the width. Okay, so we have height for each. So current at the previous lower height. So if the stack becomes empty, the height will be, sorry, width will be I. Okay, because it is a single bar. So, and if it is not empty, we will have the next smaller element on the top. So we will do I minus stack dot peak minus 1. Okay, so stack dot is empty. अगर ये true है तो the width is I, otherwise I minus stack dot peak minus 1, and then max is equals to math dot max of max comma height star width. And after that we will push the current bar into index of the current bar into the stack. So stack dot push I. Okay, and after that we will return the maximum area. Return max. Okay, now let's run this code. It is working, and let's submit it. And it worked. It is not the best possible solution, but it's good. It's not bad. And this was it for today. We have solved two medium to difficult problems. And अच्छा ठीक है, maximal rectangles hard problem ये भी करेंगे आज. I'm tired now. We will do it tomorrow and we'll try to solve the remaining implementation problem. Hard problems tomorrow. Tomorrow. So I think I should end the stream now. This was it for today. Thank you so much for joining. If anyone is watching, hey, good night. Acha, I want to. Is anyone there watching our live stream and wants to interact? There are 6 concurrent viewers. Acha, ठीक है. People left quickly. Okay, bye bye. Thank you so much for joining. See you tomorrow.
You people don't interact. Okay, 7 concurrent viewers. Let's play chess. Is anyone interested? Now we will just chill with it. Okay. I will end the stream in 10 minutes. If anyone is interested in playing chess, you can comment in the live chat. I will share the challenge link with you. Otherwise, I'm playing a random chess match. Hey, let me share the challenge link. Custom challenge. If anyone from the live chat wants to play chess, please click on that link.
Play with a random person. Start the game. Shit, that was my move. Thought
Who do you think will win? If anyone is watching, क्या लगता है मैं जीतूंगा या हारूंगा? Can I win still? Oops, ये तो गया. नहीं. हाँ, I think गया. It's a check. टूट जाएगा. क्या? अरे यार. He was playing smart. क्या बात है? He will win. I should resign. How to resign? Yes, I can. Okay, this was it for today. It's already 12:30 and see you guys tomorrow. Thank you so much for joining. You guys don't even interact. Bye bye. Good night. This is the end of our stream. Good night. Bye bye.